भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले रियल स्टेट सेक्टर में डीमोनेटाइजेशन आने के बाद की समस्याओं और नई योजनाओं पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में क्रेडाई कॉन्क्लेव 2017 आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव में देश भर से आए हुए रियल स्टेट एक्सपर्ट्स और नेताओं ने एक मंच पर रियल स्टेट की समस्याओं को सुलझाने का साझा प्रयास किया। Friends, never before has any government recognized the value, the contribution of real estate to the economy and the people of our country. And I must compliment Venkaiah ji for bringing this forth to the Ministry of Finance and to the Prime Minister. Thank you so much, Venkaiah ji, because in this budget, in the first budget, the Finance Minister acknowledged that we employ more than 5 crore Indians, real estate and construction sector, some of whom don't even know how to sign their names. 5 crore Indians means 5 crore Indian families with an average of 4 people to a family. We are talking about 20 crore Indians who are indirectly or directly getting their livelihood from our sector. So therefore the government in its wisdom and seeing the opportunity of a shortage of housing in this country, this year decided, very rightly so, to promote housing in a very aggressive way by giving an infrastructure status to affordable housing and also by giving us certain income tax exemptions and enabling the buyer with an interest subsidy. The Pradhan Mantri Awas Yojana also gives an interest subsidy to the middle class home buyer, wherein he actually gets a gift of more than 2 lakh rupees from the government when he buys his first home. So this is a great, great achievement from the government. Focus has been given for affordable housing because I believe that is where the need is, that is where the market is, and if we all understand that and if we start focusing on that, I think it will be a win-win for all property developers. There is a few fine prints again that have actually dampened the spirit. One is that we today have to pay tax on inventory, which is unheard of. Inventory which we are not, you see, which unfortunately sometimes you build, you don't know where your buyer is, it's ready the product, but you are not able to sell. And if you are holding on to that inventory, you will have to pay deemed tax. Or if somebody's got a vacant house, buying a second or third house, he has to pay deemed tax. Now this will be a discouraging factor, A, for people to build, B, for people to buy. And this, I think, needs to be looked at seriously. Otherwise, this will again be a retrograde step in for our community. अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देने के विषय पर मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिविएशन श्री वेंकैया नायडू ने भी मंच पर अपने विचार रखे। The Real Estate Regulation Development Act that has been made reality after a long delay of 8 years seeks to restore the character of the sector. The Benami Transactions Prevention Act would further complement this in this regard. RERA Act has boosted the entire industry and is definitely proving to be a game changer for the real estate sector. Eliminate fly-by-night operators from the sector while promoting the genuine developers. Infuse transparency and accountability and ensure timely project completion. Government is not asking you to do anything more than what you have promised. What you have promised on paper, you just complete that. You just complete that, we will stand by you. There will be problems. I know that after this Real Estate Regulation Act comes into force and after May 2017 when the regulators are appointed in various states, the problem is of performing the commitment. For that you need permissions. So permissions are there with the state government, with the local body also, with other central government agencies. I held a meeting with 7 of my colleagues 9 times for ease of approvals. And I am sure all these civil aviation, defense ministry, railway ministry, consumer affairs ministry, and also the, environment ministry, more importantly, and culture ministry, because of ASI and all of us sat together for 9 times. And finally, we are going to make a presentation before Prime Minister shortly, and there will be, all these things will become matter of past, and early approvals will be given to the extent possible that you need not go around, you need not come to Delhi number of times for the permission for various things. That is happening. We have made a beginning with Delhi, made a beginning with Mumbai, 2 major metropolitan cities, and I want to see the last local body also
do ease of approvals, online approvals, and at the end of the day, time fix. 30 days or 60 days, whatever finally emerges, you apply, get a reply, otherwise deemed to have been approved. That should be the policy, and we are working in that direction. And we believe, we don't want to be populism, we believe in peopleism. What is in the interest of the people in the long term, that is the policy of this government. So friends, the Pradhan Mantri Awas Yojana provides a huge opportunity. Earlier it was confined only to poorer sections, economically weaker sections, low-income groups. Now it has been extended also. Now we have huge middle class in the form of interest subsidy and tax and other concessions and relaxations have been given in the budget. Once we acquire positive character, it will lead to credibility and this will translate into much required confidence of buyers. Yesterday I was in a Credai property show in Visakhapatnam. I am a student of Visakhapatnam University and I was going to the college campus, engineering college campus, saw number of cars there. I asked them what is happening, why so many cars, Visakhapatnam, as if entire Visakhapatnam cream has come there. They said Credai property show. That shows the sector is moving up. There is a law which is coming, we talked about it, RERA. इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल स्टेट सेक्टर की चुनौतियों पर क्रेडाई के सेक्रेटरी बमन ईरानी ने सवाल जवाब किए। Don't we think being a state subject, each of the state Credai unit should monitor strictly and inform the national and the Prime Minister about what is happening in the state of ease of doing business? You'll be happy to know that Mr. Venkaiah Naidu ji, I think just last month called for a special meeting in which he had all his secretaries available out there, not only secretaries, including some of the ministers were present out there, and he has taken this up. Mumbai Municipal Corporation and Delhi were the two ULBs called for it. These are the leaders. Once they get it right, thereafter they're going to follow that for the entire state. So you should be informed that Credai at its national level and through its various chapters is doing a lot, including our Credai Maharashtra is doing a lot of stuff on this account. Right now, what all of us as Credai members need to project to the market, to the media, to government, to bureaucracy is one thing. Don't paint us with the same brush that you see or you perceive real estate developers to be. We are Credai members, RERA or no RERA. We will deliver and we don't cheat our customers. Now, if that message goes out, we have a consumer redressal forum, how are we different? We are Credai. So you have to shout that we are Credai, we are different. Before RERA we were compliant, we had the code of conduct. Even today we are answerable, we have the consumer redressal forum. So therefore, don't see us with the same tainted glasses you see the rest of the developer community or the builder community. We have done whatever we have to do, but we can't be complacent at any point of time. The amount of energy that is there today in Credai, only pray and hope it only grows. वेंकैया नायडू ने विद्यार्थियों को क्रेडाई एजुकेशनल स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट भी बांटे। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी से, जिन्होंने क्रेडाई कॉन्क्लेव में रखे अपने विचार और साथ ही प्रस्तुत किए CSR अवार्ड्स। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका क्रेडाई कॉन्क्लेव 2017 में। इस कॉन्क्लेव का एक और महत्वपूर्ण सेशन रहा अप स्किलिंग इंडिया में इंडस्ट्री की भागीदारी पर, और इस सेशन की शुरुआत की क्रेडाई स्किल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन श्री जितेंद्र ठक्कर ने। पिछले 2 साल से हमने स्किलिंग का काम शुरू किया है और 2 साल में हमने 50,000 आज तक ट्रेन वर्कर्स किए हैं और सर्टिफिकेशन भी उनका हुआ है। 50,000 लोग हम लोगों ने सर्टिफिकेशन किया है। हमने ये सोचा है कि हम सिर्फ स्किलिंग जो है ये लेबर तक सीमित न रखें, हम स्किलिंग जो है वो वर्कर टू ओनर ऐसे करें। तो हमारे डेवलपर्स के लिए भी हम लोगों ने बेंगलोर के साथ में मिलकर के वहाँ पर स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किया है और
दूसरा इवन एडमिन स्टाफ के लिए भी डेवलपर्स के ऑफिस में पियून्स हो, ड्राइवर्स हो, इसके लिए भी स्किलिंग के लिए काम शुरू किया है। आज तक 31 सिटीज में हम पहुंच चुके हैं स्किलिंग के लिए। 16 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। ऑफ साइट स्किल सेंटर भी पहला हमने अभी बेंगलोर में शुरू किया है, दूसरा महाराष्ट्र में नासिक में शुरू कर रहे हैं। क्रेडाई कॉन्क्लेव 2017 में कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में एक मंत्री के तौर पर वो ज्यादा सफल क्यों नहीं रहे। अगर इस देश में सभी सेक्टर स्किल को एक तरफ रख दिया जाए, मुझे अफसोस है मैं कामयाब नहीं हुआ। 2 वर्ष से संघर्ष कर रहा हूं और मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन एक क्षेत्र में मैं कामयाब नहीं हुआ हूं, वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर अकेला आप इस पूरे भारतवर्ष के जीडीपी के 8% के मालिक हो और बाकी सब क्षेत्र में एक तरफ, अकेले इस देश में आप 8% जीडीपी पर आपका कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आपकी तैयारी पूरी हो जाए और जिस प्रकार से आपके क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और जो संभावनाएं हैं, मैं नहीं समझता हूं कि हमें किसी क्षेत्र में स्किलिंग की, अगर आपका क्षेत्र चाहे वो कंस्ट्रक्शन में टाइलिंग हो, प्लम्बिंग हो, पेंटिंग हो, चाहे वो रेत ढोने का काम हो या लिफ्ट से जाने का काम हो, और आपके यहां तो बड़े बड़े हैवी इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस उपयोग होते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, पेरू लीमा यहां से 18,000 किलोमीटर दूर है और वहां के दूतावास ने मुझे ये लिखा कि लीमा से हम वीजा इशू कर रहे हैं पेरुवियन नेशनल के लिए हैवी इक्विपमेंट्स ऑपरेट करने के लिए उदयपुर और जयपुर में। हमारे पास ऐसे लोग भी नहीं हैं जो बड़े इक्विपमेंट्स, हैवी ट्रक्स, डोजर्स, बम्पर्स चला सके। हमारे पास उसकी भी तैयारी नहीं। मैं आश्चर्यचकित हूं कि मैं आप लोगों से कोई पैसा मांगने नहीं आया। देश की सरकार ने, जब मेरा ये मंत्रालय बना था तो पहले हफ्ते मेरे पास मंत्रालय में चलाने के लिए 5-10 करोड़ रुपया था। आज देश के प्रधानमंत्री ने स्किल मंत्रालय को पिछले 2.5 साल में इस अभियान को चलाने के लिए 30,000 करोड़ रुपया कैबिनेट से अनुमति दी है। मुझे सिर्फ आपके इस मिशन की जरूरत है। अगर आप अपना मिशन मुझे दे देंगे तो मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ऐसे ही कामयाब बना सकूंगा। राजीव प्रताप रूडी ने क्रेडाई से ये अपील भी की कि क्रेडाई को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तकरीबन 3 करोड़ लोगों तक पहुंचना है और उन्हें ट्रेन करना है। क्रेडाई से मेरा यही आग्रह है कि आप हमारे अपनी भागीदारी सीधे तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से करें। आपने कहा 5-5 लोगों को सिर्फ एक इंडस्ट्री ले लें। हम आपको 5-5 लोग पर खर्च करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 10,000 करोड़ नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम पर सैंक्शन किया है। हमारे पास पैसे रखे हुए हैं। आप अगर अपने कंपनी में 5-10 लोगों को बेसिक ट्रेनिंग कराने के बाद अप्रेंटिसशिप रख लोगे तो उसका 1/3 पैसा हम अपने खजाने से देने के लिए तैयार हैं, ताकि आप वैसे बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग दे सकें। आप तो कर भी रहे हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो आप प्रत्येक दिन करते हैं, तो इस योजनाओं का भी लाभ उठाइए। हम लोगों ने दुनिया में चाहे ट्रेनिंग जितना भी क्लासरूम में दे दे, जितना भी आप लैब में दे दे, द बेस्ट ट्रेनिंग विच हैपन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वेदर इट्स जर्मनी, जापान, चाइना, इट्स हैपन्स ऑन द शॉप फ्लोर। You have to take the child to the shop floor. Unless and until Daikin or Hitachi does not take a child to the shop floor, it will not be a complete training. We have provided enough resources for that. And the largest skill gap which has been reported in this country is in the construction sector, which is about 3 crore people who need to be trained. Having said that, अगर आप इस 3 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे तो उन गरीबों का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका भी बहुत कल्याण होगा। और इस विश्वास के साथ कि मेक इन इंडिया हमें करना है, लेकिन मेक इन इंडिया तभी संभव हो गया जब हम मेकर्स इन इंडिया का भी निर्माण करें, जो आप और हम मिलकर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव प्रताप रूडी ने स्किल लेबर्स को ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए एक बुक का लॉन्च भी किया।
कार्यक्रम का अंत हुआ CSR अवार्ड्स के साथ। आइए देखते हैं कौन बने CSR अवार्ड्स के विजेता। Ladies and gentlemen, now it's time for CSR awards, and of course I request our Honourable Minister Shri Rajiv Pratap Rudy to please hand over the awards. Now Credai, we all know, has been a very responsible fraternity and association of members who are committed to sustainability in the country, taking on the challenge to share the government vision of Clean India, Skill India and Strong India. As people with a social conscience, they consistently emphasize the relevance of contribution to society outside the business, and these awards are based upon a rigorous process by our assessment partner CRISIL and a jury headed by CEO CRISIL Ms. Maya Vengulerko. And now let me tell you the categories and invite all the winners on stage. Sports and Promotions Development, we have first runner-up Credai Bengaluru. Let's all put our hands together for them. And the winner is Nirmal Lifestyle Limited. I'm going to invite all the winners here on stage. For Clean India, second runner-up, Kalpataru Limited. First runner-up, Credai Pune Metro. And the winner is Credai Aurangabad. Child Welfare, we have first runner-up, Eldeco Infrastructure and Properties Limited. Winner is Chartered Housing Private Limited. Let's all put our hands together for them. I'm going to quickly read out all the names for Environmental Impact PO. Second runner-up, Credai Hyderabad. First runner-up, Vishram Builders. And the winner is Vaswani Estate Developers Private Limited. For Health and Medical Care, second runner-up, our own Developers Private Limited. First runner-up, City Corporation Limited. And the winner is Sobha Limited. For Skill Training and Development PO, second runner-up. Before I announce the winners for Skill Training and Development, I'm going to read out one more time the winners for Child Welfare. First runner-up, Eldeco Infrastructure and Properties Limited. And the winner is Chartered Housing Private Limited. For Skill Training and Development, second runner-up, Savvy Infrastructure Private Limited. First runner-up, Ethotech Reality Private Limited. And the winner is Credai Kushal. For Education, second runner-up, Ashiana Housing Limited. First runner-up, Sobha Limited. And the winner in